In this video, I will cover Venn diagram, its definition and the logics on which the Venn diagram is based. तो इस वीडियो में मैं वेन आरेख के बारे में बताऊंगा, इसकी परिभाषा समझाऊंगा और किन तर्कों पर ये आधारित है वो आपको समझाऊंगा। Venn diagram, the geometrical figure to express the sets, is known as Venn diagram. We can express sets by different types of figures, that is, squares, rectangles, triangles, and circles. If we want to express a school that contains teachers and students, we can express it as the following figure. So, this is the Venn diagram of school, which has some teachers and students. So, this blue color rectangle shows the boundary of school, and within that boundary, teachers are teaching in the same school and students are studying in the same school. Therefore, this red circle has been shown within the boundary of school. Similarly, the students have been shown by this red circle, and these are also shown within the school because the teachers and students are in the same school. So we cannot show teachers and students separately than school because they are part of the school. वेन आरेख समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए ज्यामितीय आकृति को वेन आरेख के रूप में जाना जाता है। यदि हम ऐसे स्कूल को व्यक्त करना चाहते हैं जिसमें शिक्षक और छात्र हों, तो हम सेट को विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि आगे ज्यामितीय आकृति द्वारा दर्शाया गया है। तो देखिए, अगर किसी स्कूल के अंदर कुछ अध्यापक हैं और कुछ छात्र हैं, तो इसको वेन आरेख द्वारा इस तरह से दर्शाया जा सकता है। तो ये नीला आयत जो है, ये स्कूल को दर्शाता है कि इसकी बाउंड्री के अंदर ही ये अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जिसको लाल वृत्त के द्वारा दर्शाया गया है, और उसी के अंदर कुछ छात्र हैं जो कि इसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो अगर हम अध्यापक और छात्रों को इन आकृतियों द्वारा इस स्कूल की आकृति के अंदर दिखाएंगे, तो इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि ये अध्यापक और ये छात्र इसी स्कूल से संबंधित हैं। तो अगर ये संबंधित हैं, तो इसी आरेख के अंदर या इसी आकृति के अंदर इनको भी दर्शाना चाहिए, इसके बाहर नहीं दिखा सकते, वरना गलत हो। So it is not necessary that we show a particular thing in a particular way or in a particular figure. तो किसी भी चीज को दर्शाने के लिए उसे किस आकृति द्वारा दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्कूल को एक आयत के द्वारा दर्शाया था और उसके अंदर अध्यापक और छात्रों को वृत्त के अंदर दिखाया था। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी तरह दिखा सकते हैं, इसे किसी भी आकृति में दिखाया जा सकता है।
So it is not necessary whether we show a school by a rectangle or a circle or a triangle. We can use any figure, but it should be same way related as we had shown in the last figure and in this figure. So a school should be outside these things. That means teachers and students. Teachers and students should be within the boundary of the school to show that they are related in the same school. So teachers and students are the part of a school, therefore they have shown inside the school. So it is compulsory. तो देखिए ये जरूरी है कि अगर आप किसी स्कूल के अंदर अध्यापक और छात्र को दिखा रहे हैं तो इनकी आकृतियां जो हैं वो स्कूल की आकृति के अंदर हो। किस आकृति से आप दिखा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So the same Venn diagram can also be expressed this way because the school is the bigger rectangle and teachers and students are contained in these two rectangles. That means these rectangles are within the rectangle of the school. So this is properly related. That means they are part of this school. Teachers and students are part of the school. They are related to the school. So this way we can also express. So it is not necessary that we can show whether by a circle or a rectangle. I think it will be clear now. तो देखिए जैसा कि मैंने पिछली आकृति में दिखाया था कि तीनों चीजें मैंने वृत्त के द्वारा दर्शाई। अब यहाँ पे मैंने तीनों चीजें आयत के द्वारा दिखा दी। लेकिन ये जरूरी है कि ये जो स्कूल का आयत है ये हम बड़ा दिखाएंगे और उसके अंदर अध्यापक और छात्रों का जो आयत है वो दिखाएंगे। अगर इस तरह से हम दिखाते हैं तो ये भी सही है। यानी ये जरूरी नहीं है कि ये आकृति आयत हो, सर्किल हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, कुछ भी हो सकता है। बस ये सिस्टम आपको फॉलो करना है कि कोई चीज अगर किसी के अंदर है उसके अंदर ही दर्शाना है। But if we show the same relationship by this figure, then it will be wrong because we have shown schools separately in a different rectangle, and these two things, that means teachers and students, in a different rectangle. That means we are separating all of them. Then this relation will be wrong because teachers and students are working within a school. Therefore, they should be contained in the bigger rectangle of the school. So this kind of expressing this relationship is wrong. तो अगर हम स्कूल छात्र और अध्यापक को इस तरह से दिखाते हैं तो ये गलत होगा क्योंकि हमने स्कूल को अलग आयत से दिखाया है, अध्यापक को अलग आयत से दिखाया है और छात्रों को अलग आयत से दिखाया है। तो इससे देखने से पता चलता है कि तीनों अलग अलग चीजें हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं, जबकि ये एक दूसरे से संबंधित हैं। अध्यापक और छात्र इसी स्कूल में पढ़ाते हैं, इसलिए ये रिलेशनशिप गलत होगा। सो इफ यू शो स्कूल सेपरेटली, teachers and students separately, then the relation will be wrong because teachers and students belong to the same school. So they should be shown within the rectangle of the school. Otherwise, it will be wrong Venn diagram. Now I will explain you by a separate relationship. For example, Uttar Pradesh, a state of India, and Rampur, Kanpur, and Agra are the districts of Uttar Pradesh.
if we show these four items like this, then this Venn diagram will not be proper because these three districts belong to Uttar Pradesh. Therefore, these three figures should be inside the उत्तर प्रदेश रेक्टेंगल। तो देखिए, अगर रामपुर, कानपुर और आगरा जो कि उत्तर प्रदेश के तीन अलग अलग शहर हैं, तो ये अलग दिखाया, ये तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, तो इनको उत्तर प्रदेश के रेक्टेंगल के अंदर दिखाना चाहिए था। अगर हम ऐसे दिखाएंगे तो ये गलत। That means Rampur, Kanpur and Agra are the districts. They are separate with each other, but they are contained in Uttar Pradesh. So this kind of figure will be wrong. So the proper relationship to show these districts with Uttar Pradesh, the right Venn diagram is this one. So this rectangle shows the state of Uttar Pradesh, and these circles represent these three districts. That means Rampur, Kanpur and Agra, which are cities of Uttar Pradesh. Therefore, these three cities should be shown within the rectangle of Uttar Pradesh. So this is the right Venn diagram. तो देखिए, उत्तर प्रदेश के तीन शहर रामपुर, कानपुर और आगरा, अगर इसको हम सही तरीके से दर्शाना चाहते हैं तो उसको दर्शाने का ये सही तरीका है। यहाँ उत्तर प्रदेश को इस बड़े रेक्टेंगल से दिखाया गया है और इसके अंदर रामपुर, कानपुर और आगरा, जो इसके अलग अलग तीन शहर हैं, इसलिए इनको तीन अलग अलग आकृतियों से इसके अंदर दिखाया गया। तो ये इस संबंध को दिखाने का सही तरीका है। Now I will express you one more relationship. For example, Uttar Pradesh is a state of India, and within this state, Rampur is a city, and Milak and Swar are two tehsils of Rampur. That means they are within Rampur. So if we show this relationship by this figure, it will be the right figure because Uttar Pradesh is shown by this big rectangle and Rampur has been shown by this rectangle, and Milak and Swar, which are two tehsils of Rampur, that means they are within Rampur. So these tehsils have been shown within Rampur's rectangle. So this is the proper way to show this relationship. तो देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो कि भारत का एक प्रदेश है और इस प्रदेश के अंदर रामपुर एक शहर है और रामपुर के अंदर मिलक और स्वार दो तहसीलें हैं, तो इनको अगर रामपुर के अंदर इस तरह से दिखाया गया है तो ये संबंध बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर है और रामपुर के अंदर मिलक और स्वार। तो इस तरह से अगर हम दर्शाते हैं तो ये बिल्कुल सही तरीका है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन संबंधों को वेन डायग्राम के द्वारा किस तरह दर्शाया जाता है। तो अब आप इसके प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। Well, this is the last type of Venn diagrams. So in this type of cases, the two things or two sets have something in common. That means some elements are common of two sets, then we can show this kind of relation. तो उन केसेस में जहां दो समुच्चयों में कुछ अवयव जो हैं वो कॉमन है, यानी दोनों में शामिल, उभयनिष्ठ,
तो ऐसे केसेस में हम रिलेशन दिखाने के लिए इस तरह की फिगर्स दिखाते हैं. तो इन दिस टाइप ऑफ relationship where two different sets have some features or some elements common. For example, if we take girls and boys of India, some dresses are common like pant and shirt, but some dresses are typically for girls or some dresses are typically for boys. For example, girls wear sari and blouse, which boys don't wear. And boys wear sherwani and dhoti, which girls don't wear. But pant and shirt are such dresses which both can wear. तो यहाँ पे देखिए लड़की और लड़कों के जो कि इंडिया में ड्रेसेस हैं, पोशाक हैं, उनको यहाँ पे दर्शाया गया है. इसमें साड़ी और ब्लाउज जो है खास तौर से लड़कियां पहनती हैं, जो लड़के नहीं पहनते. और लड़के शेरवानी और धोती पहनते हैं, जो आमतौर पे लड़कियां नहीं पहनती. लेकिन पैंट और शर्ट लड़के भी पहनते हैं और लड़कियां भी, तो इसलिए ये कॉमन पोर्शन दिखाया. और लड़कियों के वो ड्रेस जो लड़के नहीं पहनते उनको इधर अलग दिखाया है, और लड़कों के वो ड्रेस जो लड़कियां नहीं पहनती वो इधर अलग दिखाया है. ये दिखाने का सही तरीका है. तो इस तरह के केसेस में जहां पे कुछ पोर्शन कॉमन होता है, उसका मतलब ये है कि दोनों सेट में वो चीज शामिल है. सो इन टाइप ऑफ सेट्स where some portion is common, then it means that these type of elements are common in both the sets, or these features are common in both sets. So I believe now you have understood all type of Venn diagrams and now you can solve the questions. मैं समझता हूँ कि अब आप लोग सब तरह के वेन डायग्राम समझ गए होंगे और वेन डायग्राम पे आधारित जो प्रश्न हैं वो आप लोग हल कर पाएंगे. थैंक यू. So, Venn diagram and its definition and logics are not only useful for mental ability, but it is also useful for set theory in mathematics. Because to solve many questions of set theory, we use Venn diagrams to show intersection, union, and other properties of sets. So it is very easy method to explain those kind of relationships in set theory as well as in mental ability. तो देखिए वेन डायग्राम की डेफिनेशन और जो लॉजिक्स हैं ये खाली मेंटल एबिलिटी में ही नहीं काम आते हैं बल्कि गणित में भी काम आते हैं. तो मैथमेटिक्स में भी सेट थ्योरी यानी समुच्च की थ्योरी जो है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रश्नों को हल करने में, क्योंकि इसके डायग्राम के जरिए इंटरसेक्शन, यूनियन वगैरह इनका बड़ा आसानी से इस्तेमाल हो सकता है और समझाया जा सकता है. तो ये बहुत यूजफुल चैप्टर है मेंटल एबिलिटी का. तो मैं उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो लोग मेंटल एबिलिटी का लेसन्स ले रहे हैं या मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, दोनों के लिए ही ये यूजफुल है. थैंक यू.